this is Pratiksha Misra and welcome back to PM by Passion Academy. So आज मैं डिस्कस करबा जाउची बीएससी पिला मानकर जो मानकर भी केमिस्ट्री जीई रही छी यानी GE-2 पेपर रही छी से विषय रे कोन सब इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि शॉर्ट नोट अछि से सब को पूरा डिटेल्स रे आज मैं डिस्कस कर देबे जो दरे कि एग्जाम रे से सब क्वेश्चन आसीबा ही आसीबा एग्जाम खूब शीघ्र हबा को जाउची सेप्टेम्बर रे हबा को जाउची किछि कॉलेज रो एग्जाम मध्ये हेई सालानी एंड आउ किछि कॉलेज रो एग्जाम होउची मध्ये सो उत्कल यूनिवर्सिटी वर्तमान से नोटिस आसीनी खूब शीघ्र नोटिस आसी जिबा एंड जो कॉलेज पिला मानक पई एग्जाम वर्तमान चली से मानक पई मध्ये ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्लीज समस्त पेन एंड पेपर बाहर कर रखंतु एंड लिखंतु कौन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आई होप समस्त क्वेश्चन पैटर्न जानी थे इंटरनल 15 मार्क प्रैक्टिकल 25 मार्क्स एंड थ्योरी सेमिस्टर थ्योरी रोचे 60 मार्क्स यानी 60 मार्क एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन रोचे थ्योरी पेपर ना एक मार्किया क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स किंबा वन वर्ड आंसर रोचे 8टा जोटा कि 8 मार्क देन शॉर्ट क्वेश्चन 3 भाग रे विभक्त है यानी 2 भाग रे विभक्त है गोटे होची 1.5 2 किंबा 3 सो 1.5 मार्क्स 8टा आसीबो 12 मार्क रो जोटा को आपण 30टा वर्ड 30 वर्ड्स भीतर लिखिबे सेमतिका 2 मार्किया 8टा क्वेश्चन आसीबो 16 मार्क जहा को आपण 75 वर्ड्स भीतर लिखिबे एंड लॉन्ग क्वेश्चन केता आछि 4टा आछि लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्किया 24 मार्क टोटल या को आपण 500 टू 550 वर्ड भीतर जेमति हेले भी लिखिबे सो भी जानिबा हमर कोन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रही जेहेतु सिलेबस 2टा पार्ट रे डिवाइड हेची सेति लॉन्ग क्वेश्चन टिके अधिक आसीबो जमा भी टेंशन नियंतुनी मु जेतिके भी लॉन्ग क्वेश्चन कहूची पूरा बाछी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आनीची जो दरे कि एग्जाम रे आपण बेस्ट करि परिबे आ मु जेतिके क्वेश्चन कहूची ताकू लिखि रखंतु केवल सेतिके प्रैक्टिस करंतु जमा स्किप करंतुनी बाबंतुनी टिके अधिक क्वेश्चन हे जायचे जे मु गोड दिटा स्किप कर देबे बिल्कुल से सब मुंडरू काढी दियंतु जमा भी स्किप करबा कथा भाबंतुनी जदी क्वेश्चन स्किप करके जिबे एग्जाम को ताले मे भी एग्जाम भलो न हेई पारे जति कि आपण मोटिवेट हेई कछंती 85% 90% रखिबी से सब मोटिवेशन भी चल जिबो एग्जाम रे किछि भी आसीबनी जदी एग्जाम को सब स्किप करके जिबे सो प्लीज खाता पेन बाहर करंतु लिखंतु इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज मु क्वेश्चन डाकी देबी समस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देके लिखि चलंतु क्वेश्चन समस्त को सिलेबस देखा जाउतबा स्क्रीन ऊपर आई होप समस्त को ये गोटे सिलेबस फॉलो करा होतबो कॉलेज रे तो लिखंतु फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स very important question what is thermodynamics discuss various laws of thermodynamics with mathematical derivation of first law of thermodynamics आउ थरे कहि रखुची क्वेश्चन what is thermodynamics discuss various laws of thermodynamics with mathematical derivation of first law of thermodynamics next what is heat of reaction or enthalpy of reaction what is heat of reaction or enthalpy of reaction discuss different types of heat of reaction next question derive Kirchhoff's law of equation derive Kirchhoff's equation problems based on Kirchhoff's equation यानी प्रॉब्लम गोटे से देइथिबा मु प्रॉब्लम बेस्ड एथि पई कह दिले ए एग्जाम रे आसीबने जे कोनसे गोटे प्रॉब्लम से देइथिबा हम ताको आपण सॉल्व करियो सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन Kirchhoff's equation ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन जदि लिखि पारु नांती ताले वीडियो को पॉज कर दियंतु लिखि सारला परे ऑन करंतु किंबा टिके बैक करके लिखि रखंतु ओके what is gives free energy and standard gives free energy of a reaction write the distinction between del G and del G not problems write the distinction between del G and del G not next define law of chemical equilibrium define law of chemical equilibrium give the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium give the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium next question derive the relationship between Kp Kc and Kx for a reaction involving ideal gas derive the relationship between Kp Kc and Kx for a reaction involving ideal gas next define Le-Chatelier's principle define Le-Chatelier's principle discuss the effect of concentration, pressure, addition of inner gas and temperature change in the equilibrium and product formation with
suitable example and product formation with suitable example. Next, what is degree of ionization? What is degree of ionization? Discuss various factor affecting degree of ionization. Discuss various factor affecting degree of ionization. Explain what is common ion effect. से क्वेश्चन इन्वॉल्व रोची. एक्सप्लेन व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट. आउ थरे कहि रखुचे क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What is degree of ionization? Discuss various factors affecting degree of ionization and explain what is common ion effect. Next, most important long question. Derive the ionic product of water. Derive the ionic product of water. What is pH scale? What is pH scale? Derive the relationship between pH and pOH. Derive the relationship between pH and pOH. हाथ टिके स्पीड करंतु लेखिबा नले एग्जाम रे बहुत स्लो हो जिबा हाथ एंड ठीक टाइम भितर 3 घंटा भितर जमा भी पेपर सारी परिबेनी. सो प्लीज हाथ स्पीड करंतु एंड जेते पारुचंती लेखा प्रैक्टिस करंतु. जहाँ भी पढ़ुचंती पढ़िबा सहित लेखंतु. बहुत कम समय अछि. जेते लेखा प्रैक्टिस करिवे एग्जाम रे बेले बेले कोन होय ना हमर मने पड़ेनी. सो मने न पड़िले भी जदि हमर लेखा प्रैक्टिस थिबो ऑटोमेटिक हाथ चली जिवो. सेति पई मु सब बेले कहे सब वीडियो रे कहे जेते पारुचंती लेखा प्रैक्टिस करंतु. एटलीस्ट पर डे 20 पेज लेखा प्रैक्टिस करंतु. ताहले जायकि किसी गोटे एग्जाम रे आपण करि परिबे. 5 मिनिट आगुरु आपण सारी परिबे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. ताहले व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्ट एनालिसिस कांस्टेंट. डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्ट एनालिसिस कांस्टेंट किंबा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कॉमा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस and pH of the hydrolyzed salt and pH of the hydrolyzed salt. Next question, very very important is salt hydrolysis. ठीक है, less important question but next question is very very important. Give the method of preparation of benzene from phenol and acetylene. Give the method of preparation of benzene from phenol and acetylene. से क्वेश्चन रही रोजी. राइट और नोट ऑन फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन एंड साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन एंड साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? What is nucleophilic substitution reaction? Give the mechanism of SN1, SN2 and SNI reaction. SN1, SN2 and SNI reaction. Next question. Short notes on दीटा क्वेश्चन देथिबा. लॉन्ग क्वेश्चन करके 3 मार्क 3 मार्क 6 मार्क. सो शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन. ए रे सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड बी बेंजीन मेकानिज्म. सॉरी बेंजाइन मेकानिज्म. Benzyne mechanism. Next question, this is less important long question. लेस इंपोर्टाट कहूँ बोले कहीं स्किप करेंगे किंतु पढ़े कहीं लेस इंपोर्टाट ये कहूँ एग्जाम रे क्वेश्चन आसबार खूब कम चांस अच्छी जेहेतु कोविड पर आपण मैंने ऑफलाइन एग्जाम दौरान सो क्वेश्चन टिके बुलेकी आसवा से इच एंड एव्री टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कर दूसरी जमी भी क्वेश्चन आसवा आपण मैंने सबकि अटेंड करेंगे जहाँ को मुझे लेस इंपोर्टाट कहूँ टिके कम फोकस करूँ किंतु पढ़ी जातु एग्जाम को एमती ना कि पढ़े न पढ़ले जदि एग्जाम आसी जाइए मुझे ग्यारंटी देके कहूनी कि क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चन आसबनी मु प्रोबाबल क्वेश्चन कही दूसरी जो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो किंतु आपण जदि स्किप करके जिवे ताहले मु कोन करि परिबे मु तो किछ करि परिबे ना सो लेस इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कही दूची जहाँ आपन को लेस इंपोर्टेंट कहूची टिके कम इंपोर्टेंस देके पढ़ी की जानतु जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट कहूची ताको भल से पूरा लेखा प्रैक्टिस करके मुंडे रे पूरा कांसेप्ट क्लियर करके जानतु एग्जाम देवा को ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखंतु टिके लेस इंपोर्टेंट राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल
से देइथिबो कोन जेमति कि हमर अल्कोहल प्रिपरेशन केमति हुए फर्स्ट तो ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट रु हुए किंबा ईस्टर हाइड्रोलिसिस रु हुए किंबा ईस्टर रु हुए कार्बोक्सिलिक एसिड रु हुए तो ए सब प्रकार जो मेथड रही अल्कोहल प्रिपरेशन ना से सब जेकोसी गोटे मेथड से देइथिबो राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट किंबा फ्रॉम ईस्टर हाइड्रोलिसिस एमति टाइप रे जेकोसी गोटे एग्जांपल देइथिबो सो अल्कोहल प्रिपरेशन जो मेकानिज्म गुडाक अछि जो मेथड गुडाक अछि चारिटा खंडे ताको आपण माने प्रिपेयर करके जाइथिबे ओके एंड ता सहित आउ गोटे कोन पचार देबो क्वेश्चन add a note on esterification add a note on esterification आउ थरे कहि रखुची क्वेश्चन write the method of preparation of alcohol add a note on esterification next question very important notes on a oxidative cleavage of diols and B pinacol-pinacolon reagent mechanism. Pinacol-pinacolon rearrangement mechanism. Next important long question. Add a note on Reimer-Tiemann reaction and nitration and sulfonation of phenol. Next, notes on Williamson synthesis and cleavage of ether and HI. Cleavage of ether by HI. Next, most important, notes on Cannizaro's reaction, B. benzoin condensation, C. aldol condensation. A. Cannizaro's reaction, B. benzoin condensation and C. aldol condensation. Next important long question, last important long question but very very important, preparation of aldehyde and ketone from Rosenmond's reaction and from nitrites. ये होची पार्ट ए देन बी रे लिखंतु add a note on Wolff-Kishner's reaction and iodoform test माने दीटा को नेकी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पचारिबा आउ थरे कहि रखुची एथिरे दीटा पार्ट अछि ए आउ बी ए रे लिखंतु प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone either from Rosenmond's reaction पचारि पारे Rosenmond's reduction reaction किंबा from nitrates and B रे रहउची add a note on Wolff-Kishner reduction reaction and iodoform test okay so इठी पाखापाखि 18 ରୁ 20टा लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहि देछि एबे जिबा शॉर्ट नोट पार्ट को टिके धैर्य धरिकी बसंतु मे बी क्वेश्चन टिके अधिक हे पारे किंतु मु जहा भी कहूची एग्जाम रे श्योर आसीबा एंड जदि आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन भले से प्रिपेयर करछन ताले शॉर्ट नोट ताहारी भितरु ही हे जिबे एमति नै कि सिलेबस बाहरु शॉर्ट नोट आसीबो जहा लॉन्ग क्वेश्चन भले से प्रिपेयर हे कि जिबे कांसेप्ट क्लियर हे कि जिबे ताहारी भितरु ही शॉर्ट नोट आसीबो जम्मा भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीबो ही नै गारंटी दे कि कहूची बस मु एमिते क्वेश्चन कहिबी सब टाइप रो कहिबी जिते बुले बाकी क्वेश्चन आसले भी आपण माने अटेम्प्ट करि परिबे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखंतु शॉर्ट नोट्स एंड यस डाकिबा पूर्व कहि रखुची जदि आज रो वीडियो हेल्पफुल रहउची ताले प्लीज गाइस लाइक करंतु जिते भी संग माने एग्जाम दोचंती जो भी यूनिवर्सिटी रे अछंती समस्त को शेयर करंतु एंड जो माने भी वर्तमान से सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु पूरा फ्री बिल्कुल भी आपन को पेमेंट करबा को पड़िबनी पूरा फ्री रे सब्सक्राइब करचंती बा सब्सक्राइब कर दियंतु से रेड बटन को क्लिक कर दियंतु एंड बेल नोटिफिकेशन मध्ये ऑन करंतु जते बेले मु नुवा नुवा वीडियो अपलोड करबी आपन मन पाकु शीघ्र पहुंचबा एंड आपन माने प्रिपरेशन पर जोरदार स्टार्ट कर दिबे एंड यस जदि वर्तमान सुधा आपन मोर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनांती फ्री नोट्स फ्री बुक्स फ्री स्टडी मटेरियल पई ताले एबे ही डाउनलोड करंतु टेलीग्राम चैनल जानतो सर्च करंतु पीएम बायोपेशन एकेडमी एंड जॉइन करंतु इवन मो डिस्क्रिप्शन में लिंक मध्य दे देबी टेलीग्राम चैनल ला ताकु जाके मध्य जॉइन करिवे ओके ताले देखिबा शॉर्ट नोट फर्स्ट शॉर्ट नोट व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स हाथ टिके स्पीड करिवे जेहेतु टिके अधिक शॉर्ट नोट्स रही खूब कम समय भितर बहुत गुड़ाए क्वेश्चन मुझे डाकिदेवी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट zeroth law of thermodynamics next what is enthalpy of a reaction next what is bond energy next resonance energy next
bond dissociation energy. Next, Gibbs free energy. Next, law of mass action. Law of mass action. Next, define law of chemical equilibrium. Next, state Lee Chatterjee's principle. This is very important and समस्त favorite question. State Lee Chatterjee's principle. देखो तो मुझे जहाँ भी शॉर्ट नोट डाकुची ये मे बी 1.5 मार्क्स से आसीपे कि 2 मार्क्स से आसीपे तो से अनुसार आप 2 मार्क्स प्रिपेयर हूँ जदि 1.5 मार्क्स आसुच्छी आप शॉर्ट करके लिखिपारे एंड जो 2 मार्क्स आसुच्छी लिखिपारे किंतु जब बहुत शॉर्ट करके पढ़े 1.5 मार्क्स जदि से सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स आसुच्छी आपको भल मार्क मिलबनी से मुझे सब कहे टिके अधिक प्रिपेरेसन करूँ जहाँ भी कर टिके अधिक प्रिपेरेसन कले जदि से सेम क्वेश्चन 1.5 मार्क्स या शॉर्ट क्वेश्चन में पलि आसुच्छी ताले आपण काटिकी मध्ये लिखिपारे किंतु गोटे छोट क्वेश्चन को आपण बड़ करके लिखिपारे है कि जहाँ भी पढ़ुंट शॉर्ट नोट सब 2 मार्क्स हिसाब से प्रिपेयर करूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखु व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम नेक्स्ट व्हाट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नेक्स्ट कॉमन आयन इफेक्ट next degree of ionization next pH scale next write the expression of ionic product of water आउ थे कही रखुची write the expression of ionic product of water next what are buffer solution mention its types with example what are buffer solution mention its types with example next define solubility and solubility product. Define solubility and solubility product. Next, what happens when phenol reacts with zinc dust? What happens when phenol reacts with zinc dust? Next, what is electrophile substitution reaction? Next, what is a electrophile? Next, difference between primary, secondary and tertiary alcohol. Next, what is nucleophilic substitution reaction? Next, difference between SN1 and SN2 reaction. Next, convert aniline to BDC. Convert aniline to BDC. BDC कौन ना benzene diazonium chloride. Okay. Next, Getterman's reaction. Getterman's reaction. Next, what happens when alcohol reacts with Grignard's reagent? What happens when alcohol reacts with Grignard's reagent? Next, what happens when primary alcohol undergoes oxidation? Next, convert cumene into phenol. Next, convert BDC into phenol. Next, what happens when phenol reacts with aqueous bromine? आउ थे कही रखुचे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ aqueous bromine नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ concentrate HNO3 concentrate HNO3 नेक्स्ट राइमर टाइमन रिएक्शन नेक्स्ट व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस नेक्स्ट prepare aldehyde from acid chloride and nitrites. Prepare aldehyde from acid chloride and nitrites. Next, what happens when aldehyde reacts with alcohol? What happens when aldehyde reacts with alcohol? Next, what happens when formaldehyde reacts with sodium bisulfate? Next, Clemenson's reduction reaction. Next, what do you mean by heat capacity of a thermodynamic system? Next, what are the different kinds of heat capacity? Next, Ostwald's dilution law. Next, Woods fitting reaction. Next, Henderson's equation. Next, molar heat capacity. Molar heat capacity. And last question, Tollens reagent. Tollens reagent.
देखो ये सब जहाँ भी आपण मैंने केमिस्ट्री पढ़ुंट मैक्सिमम क्वेश्चन +2 बेले आम पढ़ी आसचंती नहीं कि सो एबे जदि बास से सब को टिके 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 भल कि बुझिकी रिकल करदेवे ना ताहले भी एग्जाम रे बेस्ट हो पार एंड येस जहाँ भी ये सब थ्योरी पार्ट मुझे कही जहाँ भी न्यूमेरिकाल्स रही यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रू आपण मैंने प्रैक्टिस करदेवे बुक देखिए सीबीसीएस बुक सब फॉलो करूँ सीबीसीएस बुक रे बहुत बढ़िया से डिराइव होती सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रू तो सीबीसीएस केपी बहुत बेस्ट ता देहरे जहाँ भी क्वेश्चन आंसर रोचे से सबकि सेमिस्टर रे ही आसूची सो जदि आपण मैंने हायर स्टडी करने को चाहते हैं फॉरेन ऑथर बुक फॉलो करेंगे दैट्स ओके बट सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रू जो भी सीबीसीएस बुक सब एवं प्रोड्यूस होची ताकू ही आपण मैंने फॉलो करूँ ता भितर जहाँ भी यूनिट 1 यूनिट 2 रे न्यूमेरिकाल्स रही से सब को फॉलो करूँ देखिए एग्जाम रे सब प्रकार क्वेश्चन आसो एंड ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट कथा जहाँ भी क्वेश्चन मुझे कहली से सब को लिखि रखु लेखा प्रैक्टिस करंतु क्वेश्चन लेखि लेखि ही आपण मैंने जानीपर कौन कौन प्रैक्टिस करते केतेटा क्वेश्चन सारे केतेटा क्वेश्चन बलिला ता विषय आप जानीपर सिलेबस सब बेले पाखे रखु जहाँ आप सारूँ अंडरलाइन कर चलतु जो द्वारा कि मैंने जानीपर केते क्वेश्चन सरला केते क्वेश्चन रहा केते टाइम आपको लगुच गोटे क्वेश्चन सारे से अनुसार टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ी पारे खूब कम दिन रहा एग्जाम सो से अनुसार प्रिपेरेशन स्टार्ट करूँ एंड समस्त को ऑल द बेस्ट आउ थे कही रखुच्छे लास्ट को जदि आज वीडियो हेल्पफुल रोचे प्लीज गोटे लाइक करूँ समस्ते लाइक करूँ जिते भी पिला अच्छा ओडिशा सारा सबू यूनिवर्सिटी पिला मानू शेयर करूँ एंड जिते जूनियर सीनियर जो मैंने भी अच्छा विभिन्न प्रकार कंटेंट मुझे अपलोड कर समस्त को शेयर करूँ एंड जो मैंने वर्तमान सुधा चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज 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 सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।